Let's take a closer look at the South Asian nation boasting one of the fastest growing economies in the world. आज हमारे पास इंडियन मीडिया का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की तरक्की को एक्सेप्ट कर लिया। आप सबको पता है कि बांग्लादेश बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है और एशिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क अगर कोई है तो सही मानों में बांग्लादेश है। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश ने तरक्की की, किस तरीके से अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया, क्या 2024 में सच में उन्होंने एशिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की है, चाइना से भी ज्यादा। तो आइए पहले इस वीडियो को देखेंगे जिसमें इंडियन मीडिया खुद एक्सेप्ट करा है कि बांग्लादेश ने ज्यादा तरक्की की है। पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में आपके साथ बात करते हैं। Bangladesh has had to confront several hurdles since its founding in 1971. From hunger and poverty to insufficient power supply and rising radicalism, Bangladesh has faced and continues to face many challenges. Dhaka, the megacity and country's capital, however, has experienced an exceptional period of economic growth in the last few years under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. Let's take a closer look at the South Asian nation boasting one of the fastest growing economies in the world. "2022 finished with a bang in Dhaka, with the country's very first metro rail opening. Large numbers of commuters were seen lining up in front of the metro stations in Uttara and Agargaon, all eager to ride. With the newly inaugurated metro train service, the recently opened Padma Bridge, and the ongoing construction of a new airport terminal, Bangladesh is experiencing a period of growth and excitement. The nation is establishing and implementing the critical infrastructure needed to move into a new era of modernization." ফ্যামিলি সহ নিয়ে আসি আলহামদুলিল্লাহ ঘোরার জন্য, খুব ভালো লাগতেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। আমরা আলহামদুলিল্লাহ খুব উন্নয়নশীল দেশে পৌঁছেছি আলহামদুলিল্লাহ। জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আবার আজকে সকালবেলা চলে এসেছি মেট্রো রেলে উঠতে, কারণ মেট্রো রেল হচ্ছে আমাদের জন্য একটা স্বপ্নের মতো। এত বড় স্বপ্নটাকে আসলে বাস্তব রূপে দেখতে খুবই ভালো লাগছে, এর জন্য ঘুরতে যাওয়ার জন্যই চলে এসেছি। Bangladesh is experiencing major economic advancement and is on track to graduate from the United Nations least developed countries list by 2026. Prime Minister Sheikh Hasina and her political party, the Awami League, have been in power since 2009. Under her leadership, the country has achieved many economic milestones and human development also continues to improve. However, Bangladesh still has many challenges she must face. The fight against radical Islamists still rages, for example, as they continue to pose a significant threat to the country's economic growth and modernization. 2022 proved to be a year of many achievements across various sectors for Bangladesh, as the country registered a whopping growth of 7.2% amid a global slowdown. It is also noteworthy that Bangladesh's march towards economic prosperity has always been aided by its all-weather friend, India. I really thanks to Prime Minister Modi to take this initiative, and that he contributed vaccine to not only Bangladesh, also some South Asian countries, and it's really very, very helpful. India's investments and bilateral trade have greatly benefited its neighbor. Both countries not only share physical borders, but many cultural similarities as well. As a result, significant progress has been made in recent years in enhancing the connectivity between New Delhi and Dhaka. The relationship between India and Bangladesh not only benefits the two countries, but also plays a crucial role for the political and economic stability of the region.
New Delhi and Dhaka have already stated that they would step up cooperation to counter terrorism, violent extremism, and radicalization in the subcontinent. Delhi's commitment to support Dhaka is critical for a peaceful and stable South Asia. The scenes in Karachi are devastating, with many queuing for hours for a bag of subsidized wheat flour. With the price of a 10 kg bag of flour reaching 1,600 Pakistani rupees, approximately 7 USD, a great many of Pakistani citizens can no longer afford to buy basic food necessities from shops. Recently, the Pakistani Prime Minister, Shehbaz Sharif, too acknowledged the dire situation his country had gotten itself into, and said that it was a matter of shame that a nuclear power had to resort to begging. तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए आटे के लिए ख्वार हो रहे हैं और ये तकरीबन कल का भी यही मामला पूरा दिन मैं रक्षे वाला हूँ। अब मजबूर हो गया, अभी 3 महीने गांव में गुजार के आया हूँ, ये आया हूँ तो ये आफत आया हुआ है। पता नहीं शहबाज शरीफ की वजह से और क़यामत आ रहा है, आगे क्या होगा। Pakistan's citizens continue to suffer due to the multitude of crises the Islamic nation has been facing. Political volatility, rising food inflation, a worsening economic crisis, and devastating flooding have all combined to put Pakistan on the verge of collapse. According to the State Bank of Pakistan, the country's foreign exchange reserves have fallen to 4.3 billion USD, the lowest level since February of 2014. Containers of food items, medicines, and other goods remain stuck at ports across the country due to the rapidly depleting foreign exchange, leading to a shortage of essential goods. यार गवर्नमेंट से मैं यही कह सकता हूँ कि जो ऐसी चीजें हैं, जो गाड़ियाँ बड़े लोग जो अमीर लोग लेते हैं, उनके रेट बढ़ाओ। आटे पे क्या रेट बढ़ा रहे हो यार? आटे अब कर्जा लेके कहीं से भी आटा ले आओ, दूसरी चीजों पे आप टैक्स लगाओ, कुछ भी करो, जो बड़े लोग हैं वो कर सकते हैं। अभी आटे पे बढ़ा रहे हो अमीरों को, तो उनको तो परेशानी तो हमें ही हो रही है ना। अब आटा सस्ता करो, बाकी चीजें बाढ़ में जाए, जो करनी है वो करो। According to the World Bank, Pakistan's economy is expected to grow by only 2% in the current fiscal year. It is expected that poverty in the poorest regions of Pakistan will worsen. Further, the national poverty rate may increase by 2.5 to 4 percentage points, pushing between 5.8 and 9 million people into poverty. The struggle for Pakistanis seems infinite, as macroeconomic risks in the country remain high and uncompromising. साल 2024 में देखते हैं तो साल 2024 में सिर्फ 3 से 4 महीनों में बांग्लादेश ने रिकॉर्ड देर एक्सपोर्ट की है गारमेंट सेक्टर में, और ये जितने भी गारमेंट सेक्टर में एक्सपोर्ट किए वो ईद के मौके के पर हुई है। चाइना से ज्यादा एक्सपोर्ट की है, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने इतनी एक्सपोर्ट की कि 2024 में बांग्लादेश से ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया सिर्फ 3 महीनों के अंदर। आप सबको पता है कि बांग्लादेश सिर्फ एक सेक्टर में काम नहीं करता, वो मल्टीपल जगहों पे काम करते हैं, वो मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर काम करता है, जिससे उनकी तरक्की में भी उनका बड़ा हाथ होता है और जिससे उनकी तरक्की में भी ज्यादा 4 चांद लग जाते हैं, जिसकी वजह से काफी लोग भी उनको पसंद करते हैं। आज तक जो थी वो इंडियन मीडिया कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती थी कि बांग्लादेश इतनी ज्यादा तरक्की कर सकता है, बट आज जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि बांग्लादेश में ज्यादा तरक्की हुई है इंडिया से, और कई चीजों में तो बांग्लादेश जो है इंडिया से भी आगे है। अगर बांग्लादेश ने चाइना को पीछे छोड़ा है तो इंडिया कौन सा आगे है उनसे, इंडिया को भी पीछे छोड़ सकता है। देखिए, एक सेक्टर नहीं होता जिसमें आप काम कर सकते हैं। अब बांग्लादेश गारमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, मेडिसिन सेक्टर में काम कर रहा है, एग्रीकल्चर में भी काम कर रहा है, इन सारी चीजों में बांग्लादेश गारमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बांग्लादेश जो है वो इंडिया को पीछे छोड़ नहीं सकता। जिस मुल्क ने चाइना को पीछे छोड़ दिया वो बांग्लादेश इंडिया को भी पीछे छोड़ देगा। मुझे खुशी इस बात की हुई कि आज तक इंडियन मीडिया का भी इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता था, बट आज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हमसे ज्यादा तरक्की की है। हालांकि उसमें बात पाकिस्तान की भी हुई, बट पाकिस्तान में भाई देखो कोई वो चीज नहीं है कि पाकिस्तान जो है तरक्की की राह पे जा रहा है, बाकी ममालिक तरक्की की राह पे जाते हैं और पाकिस्तान उल्टे पांव वापसी आ रहा है। तो ये चीजें हो रही है। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक शेयर
सब्सक्राइब आप लोग लाजमी कर सकते हैं।